हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 4 पैसेजेस ऑलरेडी डिस्कस किया था। प्रेजेंट वीडियो में हम लोग रिमेनिंग 4 पैसेजेस अभी एनालाइज करते हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर पैसेज. This passage was talking about mob lynching, which I think आप सब लोग aware होंगे that it is one of the contemporary socio-legal issues. All right, it is one of them. So इस particular passage में maximum questions were what do you think? What is your perspective on this particular contemporary legal issue? ठीक है, so directly questions की तरफ चलते हैं. First, and see again, these things will play a very important role that this excerpt has been taken from the Hindu. So always have that that keen sight upon this कि ये excerpt कहाँ से लिया गया है, उसे ज़रूर अपने reading habit का एक important component बनाइएगा. ठीक है, so इसके आगे questions की तरफ चलते हैं. So which of the following statements, just a second guys, which of the following statements given below justifies criminalization of mob lynching? So this question is not that typical question जहाँ पे कि आपके पैसेज से आपने इन्फर क्या किया है, ये उसके ऊपर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते. बेसिकली इन क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता है. ठीक है, सो मॉब लिंचिंग को क्या आप किसी भी ग्राउंड पे जस्टिफाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली नो, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच गोज टुवर्ड्स द एनार्की. ऑलराइट, सो जहां तक पॉइंट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो जस्टिफाइज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मॉब लिंचिंग, पहले ऑप्शन को देखते हैं. इन अ डेमोक्रेसी द एक्चुअल पावर रेस्ट विद द पीपल एंड देयर एक्शंस कैन नॉट बी पेनलाइज्ड बाय द स्टैट्यूट by the state. So I think this is outrightly wrong. There has been so many checks and balances on the conduct of the people as well. All right, second point is there is no law in India which specifically prohibits mob lynching and therefore it is not justified. It is a justified act of the people. ये पॉइंट थोड़ा नॉलेज वाला पॉइंट है, बट चलिए कमिंग बैक, अगर इस ऑप्शन को भी पूरी तरीके से देखा जाए तो therefore it is a justified act of the people. ठीक है, again that cannot be a sound proposition under the legal regime. All right, it is impossible to punish the wrongdoer in case of mob lynching. Again, this is wrong. So option number D says violence cannot be a tool to implement the will of the majority and such actions are failure of the state. ठीक है, so see if something like this happens जहाँ पे एक public outrage है या any of those circumstances, a proper legal channel has to be followed. ठीक है, so under no circumstances the incident like the solution of mob lynching should be resorted to. So आपका option number D is the most correct option here. All right, चलिए next question की तरफ चलते हैं. So next question is basically which of the following statement justifies the criminalization of mob lynching as a distinct offense apart from murder? So basically इस question में आपसे एक difference पूछा जा रहा है between the mob lynching thing and the murder as a specific offense under IPC. All right, पहला है the offense of murder is committed by a single individual or a group, but mob lynching involves a large group of individuals. Second है when violence is committed by a mob, it creates a situation of terror and anarchy having potential to disturb the public peace for a longer period. Obviously ये दोनों ही पॉइंट सही जा रहे हैं. Mob lynching is an offense which supports the idea of might is right and cannot be accepted in a democratic society 100%. So ये तीनों ही options कहीं ना कहीं same point की तरफ लेके जा रहे हैं. All of the above should be the correct answer. All right, next question की तरफ चलते हैं. Next question is the above passage states about the existence of rumors. The above passage states about the existence of rumors in the area regarding the thieves and dacoits robbing the villagers or committing child lifting. In the light of this proposition, which of the following statement is correct? Again, sort of your perspective is being checked out. ठीक है, कि क्या आप किसी भी सिनेरियो में इस पर्टिकुलर चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं? ठीक है, सो पहला ऑप्शन है आपका the villagers should not be punished as there was a genuine mistake on their part. All right, see the point is there is a genuine mistake on their part, but the point is can we resort to something like this which can lead a society towards a complete anarchy situation?
या फिर जो चीज सोसाइटी को रिग्रेसिव बना रहा है, सो देयर इज अ प्रॉपर चैनल ऑफ लीगल रिकोर्सेज एंड दैट नीड्स टू बी फॉलोड. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ये वाला पॉइंट नहीं जा रहा इस पर्टिकुलर प्रपोजिशन के साथ. Second is the villagers should be punished as they do not have any right to punish any person unless he is an offender. Alright. Next is the villagers should be punished as no individual in the country is entitled to take law in his own hand. Alright. And punish the wrongdoer. So this particular proposition we will consider as sound under legal regime. All right. So ये आपका option number C and D भी देख लेते हैं. The villagers should not be punished as they have the right of private defense against such incidents under which they can even kill a person. Answer is no. So option number C again बिल्कुल ही viable answer है हमारा, the most appropriate answer. All right. Next question की तरफ चलते हैं. So in the light of the above passage, which of the following incidents of mob lynching would be mob violence would be justified? See again, हर तरीके से वो आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश कर रहे हैं कि do you under any circumstance justify this particular act? All right. So पहला option है a group of people committing violence against people who are selling meat of an animal considered to be sacred under their religious beliefs. Alright, so हमने ये issue cow slaughter के ऊपर जितना भी issue हुआ वो बहुत ज़्यादा talked about था. Question आपसे ये पूछा जा रहा है under this situation also do you justify something like mob lynching? And I think answer should be no. Alright, so under this situation also the proper legal recourse should be taken, the proper respective rights have to be looked at, but the point is something like this cannot be accepted in a progressive democratic society. All right. Second point is the resident of a boys' hostel caught a drug peddler selling drugs in their hostel and killed him by beating. The point is drug peddling thing is a punishable offense under NDPS Act. All right, 1985. So it is basically Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act, which was enacted in the year 1985. The point is drug peddling act is illegal. ठीक है, बट क्या वो चीज इस बात को जस्टिफाई करता है कि मॉब लिंचिंग जैसा कोई चीज इसका सोल्यूशन होना चाहिए? आंसर इज नो. एंड सिमिलरली अगर आप थर्ड ऑप्शन को भी देखें तो यहाँ पे भी आपको एक रेफरेंस मिल रहा है व्हाट इज नोन एज विच हंटिंग. ऑलराइट, सो अंडर नो सर्कमस्टांसेस द एक्ट ऑफ मॉब लिंचिंग कैन बी रिसोर्टेड टू. ठीक है, सो अगेन नन ऑफ द अबव शुड बी योर मोस्ट अप्रोप्रिएट थॉट ऑल्सो एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस ऑल्सो. Alright, next question की तरफ अगर चलते हैं तो this is basically assertion and reason types. See इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा एलिट में ये बहुत ज़्यादा इस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस आप तभी बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज होगा. ठीक है, सो वहाँ पे एक एक वर्ड बहुत मैटर करता है क्योंकि असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस में ना कुछ ऑप्शन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको आउटराइटली नॉलेज के बेसिस पे उन दो स्टेटमेंट्स को चेकआउट करना होगा. सो देयर कैन बी असर्शन इज राइट, रीजन इज रॉन्ग और वाइस वर्सा काइंड ऑफ स्टफ. सो यू नीड टू हैव दैट बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन गाइस. ऑलराइट, सो पहला पॉइंट हमारा असर्शन के तौर पे जो बोला जा रहा है, mob lynching can be justified. Mob lynching can be justified only in circumstances, but the problem is can you justify something like this in any situation? Can you justify this particular act? So justified only in circumstances where the religious sentiments or feelings of a large group of people is associated. The point is I don't think the proposition entailed under assertion also goes by the correct notions of law. Alright. Second is reason में अगर आप देखें religious sentiments and feelings are of paramount consideration for the state. The point is my religious sentiment, my religious feelings are my personal attribute. But can it be religious? Can it be of paramount consideration for the state also? And there the concept of the Constitution and the fundamental right, the Article 14, Article 19, Article 21, respectively, all the articles comes into the picture. So I think only this particular point is not of paramount consideration. It can be, but it is a personal attribute of somebody. For the state, you have a larger, issues to look at. So यहाँ पे आप ना तो आपका reason का proposition सही जा रहा है और ना ही आपका assertion का reason सही जा रहा है. But again, guys, this is very, very important to understand that for the assertion and reason question, you need to have that basic knowledge.
ठीक है, only then you can truly appreciate these kind of questions. All right, so आपका option number C is again the most appropriate answer, because both A and R, assertion and reason, are incorrect. All right, so चलिए आगे बढ़ते हैं. Next passage. So this was basically the passage related to free speech. ठीक है, free speech. So again, this excerpt was taken from the case law which was Arnab Ranjan Goswami versus Union of India on 19th May 2020. All right. So free speech and Article 19(1)(a). So guys, this is very very important point that आपके 2020 एग्जाम में CLAT में 2 passages में Article 19(1)(a) का रेफरेंस आया. We have already seen your second passage जहाँ पे obscenity के बारे में बात किया था हमने. हिकलिन टेस्ट था, कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट था. वहाँ पे भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये किस आर्टिकल से related concept है. And यहाँ पे again you have the right to free speech and expression वाला point आ रहा है. So again this particular article has been used under 2 passages, ठीक है, in this exam. All right, आगे चलते हैं, questions की तरफ चलते हैं. All right. The above passage mentions about the journalist request to transfer the case to the CBI, Central Bureau of Investigation, for investigation. What could be the appropriate reason for such request? So यहाँ पे अगर आप सारे options को देखेंगे, the CBI is a central investigating agency and conducts more scientific investigation. B, which is the most appropriate answer here, where state government is an interested party, the investigation conducted by the state police may be biased. So there can be likelihood of biasness. So that is why this particular option is the most correct option. The FIRs related to an offence of defamation of the president of a national party, so the matter should be investigated by the CBI. But then I think, because there is that biasness का context कि जहाँ पे एक party खुद ही उसी के अंदर अगर पुलिस investigation होगा, that likelihood of biasness can come into the picture. Alright, so option number B is the correct option. But the point is, guys, if you truly look at this particular question, the point is कि यहाँ पे as such passive से influence वाली चीज नहीं थी. Again, I'm telling you, if you have the basic knowledge about certain legal issues, that will be no harm to you. Alright, that will not cause any harm to you. Rather, you will get that edge over the others. Alright, so हल्का नॉलेज आपको नुकसान नहीं देगा. दैट इज ऑल आई वांट टू से. ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बेसिकली पैसेज से इन्फर्ड जैसा कोई भी इसमें इंस्टेंस नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट, द above passage quotes the observation of the court in relation to freedom of speech and expression as questions you cannot answer are better than questions you cannot questions you cannot answer are better than questions you cannot question. I think there is a typo error here, because I think it's not questions, it's rather answers. ठीक है, आप ये पैसेज में भी देखना, this is I think this is a typographical error, but I think आप contextual meaning इसका निकाल चुके होंगे. So question you cannot answer are better than answers you cannot question. Now based on such observation, choose the most appropriate option which describes the scope of such question. अगर आप इसे एक basic English language के knowledge से भी check out करें, तो it's basically what? It's like the concept of reasonable restrictions on the freedom of speech and expression also operates on the questions which you pose to others. So यहाँ पे आपको अपने questions को भी एक reasonable restriction के scope में रखना होगा. That is the meaning of this particular quote unquote. ठीक है, so A कहता है the term questions mentioned are not subject to limitation imposed upon the freedom of speech and expression. ये outrightly गलत होगा. Those questions are limited to the information warranted by the people. The court is referring to the right to information through the above quote. No. D is the questions are also subject to limitations imposed upon the freedom of speech and expression. Guys, I think option number D is the correct option. इसके लिए ठीक है, अगर आपको एक बेसिक इंग्लिश का यूसेज वगैरह समझ में आता है, then you will 100% get this question. All right, चलिए, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था. चलिए, next
It is an established principle of law that the offense of defamation, harming the reputation, has many exceptions, and the imputation of truth, ठीक है, is one of those. But the accused must prove that such imputation was true and also for the public good. ठीक है, in the light of this statement, which of the following questions or statements are not defamatory? ठीक है, यहाँ पे हाँ knowledge की बात होती है कि defamation basically IPC में भी आता है under section 499 IPC, and it is one of the tortious wrongs also. ठीक है, लेकिन जब आप defense की बात करते हैं civil law में, then it is only like the truth itself is a complete shield. It acts as a complete defense. But when it comes to criminal law, there the person has to prove two things, that whatever I uttered is true and whatever I uttered is actually serving, a public interest. ठीक है, सो वो पब्लिक गुड वाला क्वेश्चन एंड ट्रूथ दोनों चीजों को कोएग्जिस्ट होना होता है क्रिमिनल लॉ में, तभी जाके वो डिफेंस मिलता है. चलिए, अगर ये नॉलेज नहीं भी था तो भी इस क्वेश्चन ने आपको पूरी तरीके से समझा दिया. सो ठीक है, वेल एंड गुड. सो एन आर्टिकल, अब हमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ये देखना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं, कौन से ऑप्शंस आपके ऐसे हैं जिसमें कोई पब्लिक गुड का भी एलिमेंट होगा. ऑलराइट, सो पहला है an article published in a newspaper about the unaccounted property of a public servant in the form of questionnaire. ठीक है, ये public good का point है. ठीक है, अब अगर आप इन तीनों ऑप्शंस को देखें तो question to a female actress about her relationship with a married man, a question to a public servant about his extramarital relationship with a colleague, an article published in a magazine stating a female politician as B grade actress. जो भी है, ये सारी चीजों में public good कहाँ है? ठीक है, सो दैट इज वाई आपका जो सबसे सही आंसर है यहाँ पे, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहा है, बिकॉज दैट हैज एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक गुड. ठीक है, एज वी से अंडर दिस कॉन्टेक्स्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In the above passage, the court ordered for the merging of different FIRs into one and the investigation to be conducted at Mumbai. What is the reason behind such order? So देखिए, there is a concept of क्योंकि अगर same cause of action पे different multiple FIRs lodge हो चुके हैं, तो obviously जितने FIRs हैं उतने सारे investigation होंगे. ठीक है, सो लेट्स सपोज देयर इज दिस मिस्टर एक्स और उनके खिलाफ अगर एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे मल्टीपल एफआईआरस फाइल हो रहे हैं, लॉन्च हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो हर जगह पे इन्वेस्टिगेशन होगा. दैट कैन कॉज हार्डशिप फॉर दैट मिस्टर एक्स. सो जनरली दीज थिंग्स कम अंडर इनहेरेंट पावर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट्स. ऑलराइट, ये सब आप फ्यूचर में देखोगे, यहाँ के लिए रेलिवेंट नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, बट ये चीजें न्यूज़पेपर्स वगैरह में बहुत ज्यादा होती हैं. ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर इशू था भी अर्नब गोस्वामी केस में. ये एक पर्टिकुलर इशू था जहां पे मल्टीपल FIRs were lodged and the person was asking for consolidation of all the FIRs, and that is absolutely okay, because that can cause hardship to that person, because हर जगह पे अलग अलग investigations होते हैं. ठीक है, so यहाँ पे yes, option number A, multiple FIRs mean multiple investigation and the same might cause hardships to the accused. So I think this is the most appropriate option. Although यहाँ पे बहुत लोगों को confusion हुआ था option number D के साथ भी. I would not go by option number D. Why? I'm telling you that. See, option number D is saying multiple FIRs are frivolous and there is only one cause of action. The point is, option number D has two components. All right, this component is all right. ये बिल्कुल सही था, दैट सही बात है. एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे यू हैव गॉट डिफरेंट FIRs लॉन्च. वहां पे ये एक हार्डशिप की बात हो सकती है, वहां पे ये बहुत ही ज्यादा टीडियस प्रोसेस बन जाएगा कि हर जगह का इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट करना होगा. बट ये चीज कहना, ये फ्रिवलस वर्ड, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर वर्ड, बिकॉज नोवेयर इन योर फैक्ट्स द फ्रिवलस वाला कहीं पे भी कोई भी मेंशन नहीं आ रहा, ना आप उन चीजों को इन्फर कर सकते हैं. सो द पॉइंट इज दिस वर्ड वाज अ प्रॉब्लमैटिक वर्ड. Alright, so यहाँ पे same cause of action was correct, but this word, nowhere you cannot infer this particular word out of your passage or out of your question. Alright, so I would go by option number A. That is the most appropriate answer. So I don't feel that option number D would have gone with this particular question. I'll still go by option number A. ठीक है, चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं. Defamation is punishable. So guys, this particular question you obviously need to have knowledge. All right. So जब आप कोई भी आप एक proper classes लेते हो, या जब आप
खुद अपने ही तरीके से जब आप तैयारी करते हैं, तो ऑब्वियसली जब आप टॉट पढ़ेंगे और जब आप आईपीसी का एक आउटलाइन लेते हैं, तो ऑब्वियसली आप इस पॉइंट को समझते हो दैट अंडर आईपीसी ऑल्सो इट इज वन ऑफ द पनिशेबल ऑफेंसेस एंड अंडर टॉट ऑल्सो इट इज वन ऑफ द टॉर्शियस wrongs. ठीक है, so yes, this question had complete legal knowledge base. All right, so यहाँ पे defamation is punishable both as civil wrong as well as a crime. Yes, so option number A is the most appropriate answer. All right, next passage was talking about the common intention and the similar intention concept. All right, again ये भी see again I'll say कि जब आप IPC पढ़ते हो it is one of the important and talked about syllabus, part of syllabus I would say. ठीक है, so common intention and इसमें common objective भी होता है, इसमें common intention भी होता है, but आपका passage basically बात कर रहा है common intention and similar intention के बीच. So point is guys, this particular point you have to keep in mind and that will come out if you read the passage. If you read the passage, all right, कि similar intention is basically जहाँ पे दो लोगों का intention है, ठीक है, दो लोग आते हैं एक जगह पे क्राइम करने के लिए, उन दोनों के अपने अपने intentions थे, जो भी एक्टिविटी उन्होंने किया उन दोनों को अपने अपने एक्टिविटी के हिसाब से, अपने अपने इंटेंशन के हिसाब से उनको रिस्पेक्टिवली पनिशमेंट्स मिल जाएगा. बट कॉमन इंटेंशन इज जहां पे लोग कॉमन या जॉइंट वेंचर के साथ काम करने लग जाते हैं. ठीक है, बेसिकली जिस इंटेंशन को मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है, जो हम दोनों के बीच का एक कॉमन कंपोनेंट बना, उस चीज को हम लोग कॉमन इंटेंशन कहते हैं. एंड कॉमन इंटेंशन इज फॉर्म्ड एट टू लेवल. वन कैन बी प्री-मीडिएटेड कॉन्सर्ट, जिसको कि आप कहते हो कि एक पहले से एक मीडिएशन था लोगों के बीच में और तब उन लोगों ने जाके ड्यूरिंग द कमिशन ऑफ द ऑफेंस उन चीजों को अपने एक्टिविटीज के द्वारा दिखाया है, जिसको एक्टिव पार्टिसिपेशन कहा जाता है, एंड फाइनली क्राइम किया. तो जितनी सजा एक को मिलती है उतनी ही सजा बाकियों को भी मिलेगी. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट लायबिलिटी गाइस. ऑलराइट, एंड सेकंड कंपोनेंट इज दैट कॉमन इंटेंशन कैन बी फॉर्म्ड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट ऑल्सो. सो या तो पहले से सोच समझ के तब जाके कोई क्राइम किया गया, या फिर उसी मोमेंट पे कॉमन इंटेंशन अराइज हो रहा है. ठीक है, सो ये दोनों ही बातें कॉमन इंटेंशन में आती है. सिमिलर इंटेंशन इज जहां पे मेरा भी एक पर्टिकुलर इंटेंशन है, दूसरे का भी इंटेंशन है, बट देयर इज नो सेंस ऑफ कॉमननेस बिटवीन वी टू. ऑलराइट, कुछ भी उसमें शेयरिंग वाली चीज नहीं है, कुछ भी शेयर्ड इंटेंशन वाला कॉम्पोनेंट नहीं है. लेकिन जहां पे आप कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं, या तो उसको प्री-मीडिएटेड कॉन्सर्ट में वो एक कॉमननेस आया है, या तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट पे ही सही, बट वो एक कॉमननेस का पॉइंट आ चुका है. ठीक है, सो ये दोनों बातें जब आप इस पैसेज को रीड करोगे आपको ये पैसेज में मिलेगा भी. ठीक है, सो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. A gang of 6 members went to a bank armed with weapons to commit a heist. Heist is, I think, robbery, है ना? So, while 5 of the gang members went inside the bank, Mr. A, the 6th member, waited outside the bank to alert them on any threat. During the heist, one of the gang members fired a gun at the branch manager. As a result, he died. All 5 escaped, but Mr. A was caught and arrested. Now choose the most appropriate option, all right, out of the passage. ठीक है, so Mr. A, all right, he was waiting outside, but the point is, why was he waiting outside? Because the intention was shared, and in that group, Mr. A was also present. So ठीक है, वो wait कर रहा था, but that was his participation in the complete commission of the crime, waiting outside. And the guarding the entire premises, that could have been his participation, guys. All right. So इस बात के ऊपर कोई फर्क नहीं आता कि वो तो जी बाहर था, वो तो कमीशन ऑफ क्राइम के टाइम पे आया ही नहीं. No, he was very well there. The intention was shared, and he was giving his participation also. ठीक है, by waiting outside. So आपका पहला ऑप्शन कह रहा है Mr. A is not liable for murder as he was outside the bank and there was no common intention. Mr. A, along with all other members of the gang, are liable for murder as there was common intention. All right. Only that person is liable for murder who actually fired the gun, and he कह रहा है Mr. A is liable only for the heist and no other offense. So I think Mr. B, option number B is the correct answer, because obviously there was an element of common intention, and Mr. A, while waiting outside, was actually performing his particular act in the entire picture of commission of crime. All right.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Raman and Raghav were riding on a motorcycle on a busy street. Suddenly, Aman bumped into their bike. A heated argument started between the three of them. While Raghav started abusing Aman, Raman hit Aman with an iron rod, lying on the road, and as a consequence, he died. Now choose the correct option. See, दोनों ने अपने अपने respective acts किए, but क्या वहाँ पे कोई commonness था? क्या कोई sharing of intention हुआ यहाँ पे? Answer is no. So आप कहोगे यहाँ पे both Raman and Raghav are liable for murder as there was a common intention developed on the spot. No, there was not any common intention which could have been developed at the spur of the moment also. ऐसा कुछ हमें facts के द्वारा दिखा नहीं है. B कह रहा है Raghav is not liable for murder as there was no common intention to kill Aman. All right. C कह रहा है no one is liable as Aman was a wrongdoer himself and he started the fight. D कह रहा है only Raghav is liable for murder as he started abusing Aman. I don't think C and D are making any logic here. So option number B is the correct option. All right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. After reading the passage, which of the following is not correct? ठीक है, which of the following is not correct in relation to the difference between common intention and similar intention? मतलब आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, करेक्ट नहीं है. ठीक है, पहला कह रहा है सिमिलर इंटेंशन इज डेवलप्ड प्रायर टू द कमिशन ऑफ ऑफेंस बट द कॉमन इंटेंशन इज डेवलप्ड ओनली एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस, व्हिच आई थिंक हमने डिस्कस किया दैट नो कॉमन इंटेंशन कैन बी अराइव्ड एट बोथ वेज. वन कैन बी प्रीमीडिएटेड कॉन्सर्ट एंड नेक्स्ट कैन बी एट द स्पर ऑफ द moment. All right. चलिए नेक्स्ट कह रहा है अंडर कॉमन इंटेंशन ईच ऑफ द ऑफेंडर इज इक्वली लाइबल फॉर द ऑफेंस बट अंडर सिमिलर इंटेंशन ईच ऑफ द ऑफेंडर इज डिफरेंटली लाइबल, व्हिच आई थिंक गाइस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना. सी कह रहा है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलर और कॉमन इंटेंशन वन मस्ट एनालाइज द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस. ऑब्वियसली there could be thin line difference but there is a difference and that will play a huge role coming to the conclusion कि क्या वे सारे accused में common intention था या similar intention वाला ये केस है. ठीक है, D कह रहा है the boundary between similar and common intention is very fine and it may sometime overlap. Yes, but then facts and circumstances of the case will play a role. All right, so आपका B, C, D सही है. All right, ये correct propositions हैं. लेकिन हमारा question था which of them is not correct and option number A is not correct because common intention could be developed at both the points. It could be either premeditated concert or it could be developed at the spur of the moment. All right. Next question की तरफ चलते हैं. Mr. X and Y entered into a house at night to commit theft. While committing theft, Mr. Y committed sexual assault on a minor girl of aged 11 years. Identify for which of the following offenses Mr. X is liable for. Mr. X and Y. Okay, so common intention था इनका theft का. Y ने commit किया sexual assault also. ठीक है, X की लाइबिलिटी हमें यहाँ पे बतानी है. अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आपने क्लैट के प्रीवियस ईयर्स को अगर आपने देखा होगा या आप 2021 टारगेट कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर्स जरूर देखें. ठीक है, एंड अगेन आई वुड से एनीवेज एंड में आफ्टर डिस्कशन ऑफ ऑल द पैसेजेस आई विल बी टेकिंग यू टू द जोन जहाँ पे हम लोग एक फुल एनालिसिस करेंगे कि हर पैसेज की क्या रिक्वायरमेंट है. आप बट इस चीज को आप अभी से ध्यान में रखिएगा दैट प्रीवियस ईयर्स विल स्टिल प्ले अ ह्यूज रोल. डोंट थिंक कि क्योंकि पैटर्न में कुछ चेंजेस है एंड सी द एंटायर थिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ऐसा नहीं है कि जो वो फसाद क्रिएट किया गया था कि लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है, वो चीज कहीं ना कहीं गलत पॉइंट है. आपको अगर नॉलेज रहेगा, आई एम नॉट सेइंग get into all the laws and all the sections and everything, absolutely no, that is a futile effort, no doubt about it. ठीक है, लेकिन if you have the basic knowledge about these legal topics ना, if you know whatever is happening around you, if you are well versed with contemporary socio-legal or legal issues, यहाँ पे you will certainly and you will definitely get that edge over the others. You will be in a better position to decode and interpret your passages in a better way. ठीक है, so obviously यहाँ पे the point is कि आपके previous years में अगर आप previous years CLAT का check करेंगे, I think
सिमिलर फैक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पे they were co-accused and they went to commit burglary and there one of them was caught involved in something some sort of sexual assault with some other person. So the question was kind of same facts. आप यहाँ पे देख सकते हैं. So यहाँ पे both theft and sexual assault as there was a common intention. Answer is no. Common intention की अगर बात करें तो theft के लिए था but sexual assault के लिए नहीं था. Only theft as there was a similar intention. But यहाँ पे similar intention का भी point नहीं था as far as sexual assault is concerned. Only theft as Mr. X had a different intention from Y. Yes, option number C. ठीक है, क्योंकि X के लिए तो उनका कॉमननेस था बट सेक्सुअल असॉल्ट के लिए वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे था और जिसके लिए दूसरे पार्टी को पता भी नहीं था. सो यहाँ पे सिमिलर का भी जोन नहीं है, कॉमन तो हटा दीजिए. ऑलराइट, सो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. Which of the following statement is correct in relation to the difference between common intention and similar intention? All right, so यहाँ पे हमें common intention and similar intention के points को समझना है. ठीक है कि correct कौन सा है. अब पहला ऑप्शन आपका कह रहा है intention of the accused and co-accused can be inferred from the facts and circumstances of each case. Yes, absolutely yes. Facts will tell you कि उनका intention कैसा था. So the point is if they were actively participating into the entire process of commission of the crime, then certainly वहाँ पे commonness का element highlight हो रहा है. So facts definitely is going to play the important role. Next है आपका under common intention it is considered that all the accused have jointly committed the offense themselves and they are jointly liable. Absolutely yes. So ये सारे concepts आईपीसी में जॉइंट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट बनते हैं. अगर कॉमन इंटेंशन का एलिमेंट प्रूव हो गया तो एक अक्यूज को जितना ऑफेंस की जितना सजा मिलेगी, जितना पनिशमेंट उसे मिलेगा, एग्जैक्टली उतना ही बाकी भी अक्यूज में जाएगा. ठीक है, सो आपका ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट. सी सेज दैट ईच अक्यूज इज लायबल फॉर द ऑफेंस ही हैज एक्चुअली कमिटेड इफ द कॉमन इंटेंशन कैन नॉट बी प्रूव्ड. यस, सो अगर कॉमन इंटेंशन नहीं है इसका मतलब सिमिलर इंटेंशन में लोग काम कर रहे थे. अगर सिमिलर इंटेंशन है तो हर किसी को अपने रिस्पेक्टिव एक्ट की पनिशमेंट मिलेगी ना. सो आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हुआ. आंसर बिल्कुल सेफ है, ऑल ऑफ द अबव. ऑलराइट, विद दैट नाउ वी कम टू द लास्ट पैसेज. ऑलराइट, सो चलिए लास्ट पैसेज ऑब्वियसली आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के रिलेशन में था. एंड सी द पॉइंट इज जब भी आप किसी भी लॉ एंट्रेंस किया, अगर क्लैट स्पेसिफिक होके भी बात करें तो सी आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे हमारे पास 3 कॉम्पोनेंट्स आते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, नो डबल जियोपार्डी एंड राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. ये तीनों ही टॉपिक्स लीगल रीजनिंग जोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इवेंचुअली. ठीक है, सो इनका एक फेयर नॉलेज रखना आपको हमेशा एडवांटेजियस रखेगा एज फार एज दीज पैसेजेस आर कंसर्न. सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. अगर आप एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ समझते हैं तो इट्स बेसिकली कि आप एक क्रिमिनल प्रोविजन का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं करते हो. इस टाइम पे जो एक्ट किया वो अगर इसी टाइम पे ऑफेंस है तभी आप उसे क्राइम कहेंगे और उसकी जितनी भी सजा इस टाइम पे है उतनी ही सजा आप सुनाते हैं. अगर ये सजा बढ़ गई तो बढ़ा हुआ सजा आप नहीं दे सकते, लेकिन अगर ये सजा को घटा दिया गया है तो आप कम की हुई सजा दे सकते हैं. आपको जितना पैसेज में इंपॉर्टेंट था वो समझा दिया. ऑलराइट, अब क्वेश्चंस की तरफ अगर चले तो सी द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेटेड द सेक्शुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट. Just a second, guys. Just a second. The Parliament of India legislated the Sexual Harassment at Workplace Act in the year 2013, and simultaneously some new offences were also added to the IPC 1860. Mr. A is an employee of an institution against whom departmental inquiry has been initiated. ठीक है, for committing this particular act in 2012. Alright, so कानून आ रहा है 2013 में, इंक्वायरी इनिशिएट हुआ है 2012 में. Now choose the correct option. Obviously आप रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं दे सकते, कोई भी पीनल प्रोविजंस अब आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसका मतलब होगा आप बैक डेट पे जाके उसे अप्लाई कर रहे हैं. So first option says such inquiry is valid as per Article 20 Clause 1 of the Constitution as the complaint was made after the Act came into force. But no, I think inquiry पहले ही हो चुकी है, start हो चुकी है, so आपको option number A नहीं जा सकता. Next कह रहा है Article 20 Clause 1 will not be applicable as the matter does not relate to the offence. No, I don't think.
C, as the act was passed in the year 2013, any inquiry under such act is invalid. No, यहाँ तक भी conclusion नहीं जा रहा. Option number D says only inquiry may be conducted, but no penal action can be taken against him after such inquiry. So अगर आपने penal action start कर दिया, इसका मतलब है आप उस law को retrospectively apply कर रहे हो, जो कि Article 20 Clause 1 prohibit करेगा. All right, so आपका option number D is the correct option. ठीक है, चलिए next question की तरफ देखते हैं. Just a second, guys. Article 20 Clause 1 would not affect which of the following acts of the legislature. हमने ये समझा कि अगर enhancement है तो Article 20 Clause 1 का बार आएगा, अगर reduction है सजा में तो Article 20 Clause 1 का बार नहीं affect करेगा. All right, पहला कह रहा है Act of the Legislature enhancing. ठीक है, यहाँ पे आपका 20 Clause 1 का 20 Clause 1 would not affect which of the following acts of the legislature. यहाँ पे affect करेगा 20 Clause 1. Second कह रहा है Act of the Legislature enhancing the amount of fine. See, all these points are talking about enhancement. ठीक है, जहाँ पे कि 20 Clause 1 आएगा. ठीक है, C कह रहा है Act of the Legislature changing the punishment of death to life imprisonment. अगर आप इसे appreciate करें तो यहाँ पे एक reduction का sense है. And next कह रहा है Act of Legislature changing the nature of imprisonment from simple to rigorous. So again this is enhancement zone ना, जो simple imprisonment थी उसे rigorous में convert करें तो it is obviously enhancement of the punishment, right? The nature of the punishment. So आपका option number C was only talking about the reduction thing. So option number C is the correct answer. All right, चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं. Mr. A is a student of law, aged 19 years. He's socially active, expresses his opinion on social platforms, media platforms. In one of his blog, criticized policy of the state government. He also stated that the government is biased towards a particular religion. Said blog was posted on 19th of April 2020 and subsequently an amendment. So subsequently an amendment was made to IPC. Whereby hate speech was made a distinct offence and punishment was prescribed. An action was brought against him under the said provision for the blog. Now choose the most appropriate option amongst the following. इस question में I think there is a bit of the problem, but again there is a bit of the problem, but still answer जो आपके key में दिया गया है that happens to be the most appropriate answer. I'll let you know why. See, the point is he wrote something in his blog, but that continued. And इसका जो ये continued process था ना, that was the problematic point. ठीक है, so कहीं ना कहीं वो चीज रह गया वहां पे, and from there the question began. All right, so क्योंकि उसने उसे remove नहीं किया था, so that is why he may be liable for the offense of hate speech. All right. Although there is a problematic zone again, guys, because hate speech को यहाँ पे define नहीं किया गया था. So आप क्या यहाँ पे assume कर रहे हो या क्या कर रहे हो, इस चीज के ऊपर हल्का सा point है यहाँ पे जो सोचने वाला point है. B नहीं जा सकता. ठीक है, C as A may not be liable for the offense because the act was done before the amendment. No, but then that continued na after the amendment also. That is the point. D is Mr. A may not be liable for the offense as his blog was innocent and a fair criticism. ये हो सकता था अगर उन्होंने hate speech को समझाया होता to some extent and उसके defenses के बारे में बोला गया था. Otherwise, this could have acted, a fair defense also, that fair criticism है या innocent publication था. So that was fine. That could have been fine. But since वो चीजें define नहीं है यहाँ पे, so आप option number A के साथ ही चलो. That is the safer option, I would say. ठीक है? So, चलिए next. Considering the fact situations given in the above question, the Parliament passes a legislation in September 2020 whereby an amendment is made to the Juvenile Justice Act. Now a person below the age of 20 would be a juvenile, and special procedure would be followed for his trial. All right, choose the appropriate option amongst the following. Point है यहाँ पे reduction का sense आ रहा है because if a child accused will be treated under Juvenile Justice Act, वो scenario और जब IPC में एक adult की तरह try करना होता है वो scenario में फर्क होगा. So यहाँ पे reduction का concept आएगा Juvenile Justice Act के साथ. So यहाँ पे आपका would not be considered as juvenile. No, don't go by this. Mr. A would not be considered as juvenile because the amendment came after he committed the offense. But no, यहाँ पे age category यहाँ पे mentioned है ना. C is Mr. A would be considered a juvenile and tried under the new procedure.
गो बाय दिस, क्योंकि अगर रिडक्शन की बात की जा रही है तब 20 क्लॉज 1 का रिगर काम में नहीं आएगा। ऑलराइट, सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडरिंग द, अच्छा इस क्वेश्चन का अगर रिवर्स होता ना, अगर इस क्वेश्चन का रिवर्स होता तो फिर इसका आंसर मतलब 20 क्लॉज 1 के रिगर में वो फॉल कर जाता, क्योंकि तब आप एनहांसमेंट की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप रिडक्शन की बात कर रहे हो, सो 20 क्लॉज 1 का रिगर यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कंसीडरिंग द फैक्ट सिचुएशन इन द थर्ड question to this passage, the parliament passes a legislation for the probation of offenders under which any offender, and guys probation is also towards the reduction point, ठीक है, so ये भी एक beneficial प्रावधान होता है जो कि reduction की तरफ जाता है, ठीक है, so under which any offender below the age of 21 will not serve the sentence of imprisonment in a prison, instead he will serve the sentence in a probation house. Now choose the most appropriate option, ठीक है। First option says A will get the benefit of probation of offenders act. Yes, because it is again taking you towards the reduction zone, and that is not problematic under 20 clause 1. ठीक है। B कह रहा है Mr. A will not get the benefit as it is prohibited by Article 20 clause 1 of the Constitution, but no, again रेपिटेशन में जा रहा है, रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है, 20 क्लॉज 1 यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगा। C is it is discretion of Mr. A to decide whether he wants. Absolutely no, none of the above. Why to go for this when you have a better option here? But again, if you do the previous year's question, if you look at the previous year's question, similar facts have been asked. Where there was a minor, he was convicted of some offense, and during his trial, Probation of Offenders Act was passed, and the question was that you will give the beneficial interpretation for that accused, because reduction या beneficial interpretation का point आ रहा है कि अगर उस चीज की सजा कम कर दी गई है तो 20 clause 1 का रिगर काम नहीं करेगा और आप वो सजा सुना सकते हैं, ठीक है। So with that guys, I think we are done with the all the legal reasoning passages. We have elaborately at length we have discussed the entire passages with all the questions and everything. Now the important point is कि मुझे आपको हर एक पैसेज के थ्रू एक बस ये पॉइंट समझाना है दैट ये हर पैसेज को आप कैसे डील करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप इसे सिर्फ ये 8 पैसेजेस थे, इन 8 पैसेजेस में हमने क्या समझा कि क्या चीजें किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप पैसेज नंबर 1 को देखें तो ये फोर्स मेजर के बारे में बात कर रहा था, जो कि अगर आपको एक लीगल नॉलेज होगा अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जैसे अगर आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, आप सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी समझते हैं, आप फोर्स मेजर, चलो ये तो फिर भी पैंडेमिक्स के टाइम पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इस वजह से अफेक्टेड हुए थे। सो फोर्स मेजर वाली चीज, सो बिट ऑफ नॉलेज वुड डू नो हार्म गाइस, एंड द पॉइंट इज व्हाई वी वर डिस्कसिंग दैट पैसेज, आई थिंक हमने ये डिस्कस किया था दैट देयर कैन बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल hardship which does not render a contract void. So ये चीजें अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप इस पैसेज को बेहतर तरीके से समझ पाओगे या आप ऑप्शंस को बेहतर तरीके से एलिमिनेट कर पाओगे। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है when we solve MCQs types of questions, ठीक है। सेकेंड पैसेज की अगर बात करें तो ये ऑब्सेनिटी के ऊपर था। अगेन आर्टिकल 19(1)(a) का एक नॉलेज वाला सवाल था उसमें, एंड ऑब्सेनिटी क्योंकि एक केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट था रिगार्डिंग द एक्टिविस्ट, सो वहां पे अगर आपको लीगल केसेस के बारे में नॉलेज है, ठीक है, जो कि एक लीगल वेबसाइट को फॉलो करके या लीगल ब्लॉग्स वगैरह को रीड करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। सो द पॉइंट इज कंसोर्शियम ने भी ये पॉइंट पुट अप किया था कि एनीवेज जितनी भी चीज़ें लीगली आपके अराउंड चल रही हैं उन चीज़ों का नॉलेज रखना इज इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, सो ये कहीं ना कहीं केस लॉस से था, बट अगेन केस लॉस के बारे में अगर पता भी है तो उस क्वेश्चन में हेल्प नहीं मिला था, बिकॉज दैट वाज रिलेटेड विद द पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बन गया था वो, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज 3 की बात करें तो एनवायरमेंटल लॉ, अगेन इट वाज अ टॉक्ड अबाउट इशू, हमने देखा था ये सारा सिनेरियो सोसाइटी में, सो दैट इज वहीं से ये कॉन्सेप्ट भी आया। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में यस, अगर आप रायलन वर्सेस फ्लेचर समझ रहे हो, अगर आप MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट समझते हो, पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट समझते हो, इसी तरीके से बहुत सारे और भी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आ जाता है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल आ जाता है, ये सब एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। जब हम एनवायरमेंटल लॉ के बारे में बोलते हैं तो ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे भी बोला गया है, एंड इंडिया बीइंग द सिग्नेटरी टू दोस कन्वेंशंस, एंड आल्सो द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज थ्रू इट्स लैंडमार्क जजमेंट्स हैव हाइलाइटेड दीज
concepts altogether. So अगर आप इन चीज़ों का knowledge रखोगे ना, that would not cause any harm to you. ठीक है. नेक्स्ट इज नेचुरल जस्टिस. ये तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एक लीगल स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए. ठीक है. सो इससे रिलेटेड जब आप वेरियस लॉ एंट्रेंसेस को देखते हैं, जैसे अगर आप कुछ एकदम अगर आप थियोरेटिकल वाले क्वेश्चंस देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्लो करते हैं. बट यहाँ पे भी चलिए पैसेज ने आपको समझा दिया, दैट वाज ओके. ऑलराइट. मॉब लिंचिंग. सी दिस पर्टिकुलर पैसेज ना ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे काम कर रहा था, क्योंकि एक तो इस पैसेज ने आपको ये समझाया कि भाई आपको कंटेम्प्रेरी सोशियो लीगल के बारे में पता होना चाहिए. एंड दूसरी बात ये थी कि सी द पॉइंट इज यू हैव टू रीडिंग थिंग, you know, as I said, it was a savior point for you guys. ठीक है. सो रीडिंग एस्पेक्ट को जरूर इनकलकेट करें. ये सब स्किल है, nobody is born with it. You have to work on it and one day, you know, through your consistency, इट इज एन इवेंचुअल प्रोसेस. ऐसा बिल्कुल मत उम्मीद रखिएगा कि आज ही आपने पढ़ा और आज ही आपको असर मिले. नहीं, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेसिंग होगा, बट 100% इसका रिजल्ट दिखता है. सो यू हैव टू रीड, टाइमली बेसिस पे यू हैव टू रीड. ऐसा नहीं है कि आप रीड करना स्टार्ट करें और आप बिल्कुल ही रीड करते हुए चले जाए. नहीं, क्योंकि आपको कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रास्प करनी होंगी. सो अपने रीडिंग स्किल्स को थोड़ा सा फास्ट लेवल पे लेके जाइए, उसको टाइमली बेसिस पे रखने की कोशिश कीजिए. कॉम्प्रीहेंड करना समझिए, जिसमें आपको लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. आपका जितना ज्यादा वोकैब के ऊपर कमांड है वो आपको हेल्प करेगा. प्लस चर्निंग जरूर कीजिए. चर्निंग का मतलब होता है जैसे मैंने कुछ पढ़ा, मैंने उसे समझा, एक थॉट प्रोसेस में उसे लाना, ताकि आप एक पर्सपेक्टिव के साथ उस चीज को समझ सके. जैसे इस पर्टिकुलर पैसेज में everything was related, how do you justify this particular act, whether you justify under this circumstance or this circumstance or whatever. So यहाँ पे the point is I have to read, I have to comprehend, that thing has to be, you know, churned inside me so that a perspective comes out. Alright, and that should be legally viable perspective obviously. ठीक है. Next was again, you know, free speech. ये सारी चीजें आपने talked about issues से ली थी. So ये चीज तो must है. ठीक है, ये चीज तो मस्ट है. नेक्स्ट वाज अगेन कॉमन एंड सिमिलर इंटेंशन. ये थोड़ा सा नॉलेज पार्ट पे गया था ये वाला पैसेज आपका. अगर आप क्रिमिनल लॉज वगैरह का एक बेसिक नॉलेज रखते हैं, डेफिनेटली आपको इस पैसेज में कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. नेक्स्ट इज अगेन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आर्टिकल 20. आई सेड एट दैट टाइम ऑल्सो कि आर्टिकल 20 का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. तीनों डायमेंशंस उसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लीगल रीजनिंग के लिए. ऑलराइट. सो और ये चीज भी जरूर ध्यान में रखिएगा कि हर पैसेज का वो एक्सर्प्ट कहाँ से लिया गया है. सो जितने भी आपके लीगल वेबसाइट्स हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, लीगल वेबसाइट्स बहुत सारे हैं. लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है, लॉ ऑक्टोपस है, लीगली इंडिया है. ये जितने भी हैं, ये पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि ये लॉ एंट्रेंसेस के लिए बनाए गए हैं. नो, इट इज बेसिकली फॉर द पीपल हु हेल फ्रॉम, यू नो, लीगल फ्रेटर्निटी. सो आपके लिए हर केस इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट वहां पे यू नीड टू हैव दैट विजडम कि कौन सी बात एक नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है, या वहां पे एक सोशियो कोई लीगल इशू इन्वॉल्व है. सो उन चीजों की एक समझ रखना वो बहुत ह्यूज रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम के लिए. ठीक है. सो आपको रीड करना है, आपको क्या रीड करना है और कितने टाइम में फिनिश करना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो अगर आप कलेक्टिवली इन सारे पॉइंट्स को समझें तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए. अगेन आई एम रिटेरिएटिंग दैट ये बिल्कुल मत सोचिएगा दैट लीगल नॉलेज विल नॉट प्ले अ रोल टू यू. जब आपके पास एक बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज होगा वो आपको एज देगा ही देगा. आप इंटरप्रेट बढ़िया से करोगे, आपके पर्सपेक्टिव्स बढ़िया से बाहर आएंगे. ऑलराइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.